अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। आउटलाइन पढ़ेंगे। इससे पहले प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे कोई 1 सवा घंटा हो गया मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली एस रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों के पेपर हैं तो इतना तो मेरा ख्याल है कि बनता है। अगर कोई भी बंदा आपके लिए कोई थोड़ी सी स्ट्रगल, मैं नहीं समझता कि मेरी स्ट्रगल है या मेरी कोई मेहनत है, तो अगर आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन होगी। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना चाहें, पॉजिटिव देना चाहें, नेगेटिव देना चाहें, वो फीडबैक भी आपका राइट बनता है, तो वो दे सकते हैं आप। Existence of Pakistan, a God-gifted state, problems are part and parcel of life. Pakistan is facing many problems: weak democracy, political instability, low literacy rate, energy crisis, unemployment, increase in population, and weak foreign policy, etc. We can overcome these problems with iron will, and the last one is conclusion. Pakistan came into being on 14th of August 1947 in the holy month of Ramadan. Our forefathers and political leaders did a long struggle with uncountable sacrifices to achieve their destination. Bad luck happened to this newborn state when the founder of Pakistan died after 1 year of the birth of this God-gifted state. After that, there started a chain of miseries and problems in Pakistan. Pakistan is still facing a lot of problems. The weak and crippled democracy is the biggest problem of Pakistan, so democracy plays a key role in the stability and progress of any country. But unfortunately, democracy did not flourish well in Pakistan. Political instability and chaos is another problem being faced by Pakistan. The problem is that our leader is not mature politically. They cannot take bold decisions in favor of Pakistan. They are corrupt and insincere with the people of Pakistan. Low literacy rate is another problem being faced by Pakistan. Majority of the masses is illiterate. They even do not know the meanings of democracy. They are so simple to become puppets in the hands of corrupt politicians. They do not know even their rights well. Energy crisis is another problem faced by Pakistan. Shortfall of electricity has reached to an unprecedented level. There are long hours of load shedding all over the country. This energy crisis has affected other sectors, resulting low country progress. Unemployment is also rising day by day. Maximum graduates are eligible. People do not get suitable jobs. They are unemployed, and due to this problem, poverty level is increasing in this country. देखिए, हमारे सारे इश्यूज़ यहाँ पे सोशल इश्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तानी इश्यूज़ में बताए गए हैं कि हमारी करप्शन का भी इशू है, हमारी गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी का भी इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू है, स्टूडेंट्स को उनकी सूटेबल जॉब्स नहीं दी जा रही हैं, गुर्बत का भी इशू है, उससे पॉवर्टी पैदा हो रही है। जितने भी इशूज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे, एनर्जी क्राइसिस भी हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। In the next line, due to this problem, it becomes very difficult for a layman to make the both ends meet. Here in Pakistan, there is a population explosion. This increase in population is very alarming. In this situation, it becomes very difficult for and government to provide them the basic necessities of life. This increase in population causes low life standard for the people of Pakistan. Inflation or rise in the prices of daily use has broken the back of the people of Pakistan. कमर तोड़ के रख दी है ये हर रोज़ की महंगाई ने. With the low income of the average people are unable to buy the necessities of people. लो इनकम वाले जो लोग हैं, एवरेज पीपल जो हैं, वो अपनी डेली बेसिस की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी पूरी नहीं कर सकते. द बिजनेस स्ट्रेटा are also greedy. They create a temporary shortage of necessary items in the market and sell their commodities on the prices of their choice. वो शॉर्टेज कर देते हैं, टेम्प्रेरी शॉर्टेज कर देते हैं कमोडिटीज़ का, और बाद में वो अपनी प्राइस, अपनी चॉइस की प्राइस पे सेल करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लालची हो चुके हैं जो हमारे बिजनेसमैन हैं. Weak foreign policy is another problem of Pakistan. We are the victim of severe chaos. Our foreign policy is weak. Our foreign minister does not take a strong stance of the policies. We are unable to convince the world on many related issues. This weak foreign policy is the symbol of weak democracy. For the strength of any nation and any country, it is necessary to be a corruption-free nation and corruption-free country. Corruption is another problem that is being faced by Pakistan. The leaders of our country are corrupt. They loot the country with the both hands and indulge in money laundering. In this way, they weaken the economy of Pakistan. Summing up the discussion, we can say that Pakistan is facing a lot of problems, but it does not mean that we cannot cope with these problems. We are a brave nation. With a lot of courage, well planning, education and political maturity, we can get over all these problems.
और ये हमारा ऐसे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट ऐसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।